Hey everyone, welcome back to my channel Chirpy Shilps, and this is Shilpa. How are you guys? I hope you're doing good. So today I am planning to create this amazing reverse, smoky eye look, which is created by Smitha Deepak in her latest video. I think कुछ 2-3 दिन पहले, I'm not sure, last week or maybe this week she has posted this video, and I really love that video. And मेरा मन किया कि to recreate that same look, reverse smoky eye, क्योंकि मुझे कुछ बहुत different concept लगा. So I tried to create that look. Let's see कि कैसा ये look create होता है. तो चलिए फटाफट से start करते हैं. How to create this one. So first, for creating this look, I'm using this concealer. This is Fit Me concealer in the shade Sand 20, and Smitha also used the concealer, before starting with eye makeup. So let's start with the concealer first. So now after concealer, I'll be setting my eye, that concealer with this Lotte London Ready Set Go translucent powder. So I'll take a bit. स्टेप है वो आपको है कि एक सेलो टेप आपको चाहिए इसके लिए, एंड ये जो आपकी लोअर लैश लाइन है इसकी एक्सटेंशन में ही आपको यहाँ पे सेलो टेप लगानी है. सो आई एम ट्राइंग टू अप्लाई दिस वन कि वो यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन लगे. नॉर्मली हम नीचे की साइड लगाते हैं, बट फॉर दिस रिवर्स आई शैडो लुक हम इसे ऊपर की साइड लगाएंगे. सो आई गेस आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे को लगाने के लिए, बट आई थिंक आई विल गेट दिस राइट. या it's perfect now. So after application of tape, जो next step है वो है to create a smoky eye effect. और उन्होंने अपनी वीडियो में earbud का यूज़ किया था, so I'll be using the same. and black color में यूज़ करूँगी from the palette Nicka के का जो palette है मेरे पास. So let me take a good amount of color on it, and I'll start with my lower lash line. And अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, एंड इससे अच्छे से स्मज भी हो जाएगा. नाउ आफ्टर टेकिंग द लोअर वन, हम सेम जो है ऊपर भी स्प्रेड करेंगे फॉर द स्मोकी इफेक्ट. एंड इसी से ब्लेंड भी करेंगे. तो आई डोंट थिंक सो जो स्मजी आईज हैं वो बिल्कुल वही है जो स्मिता दीपक ने भी वीडियो में दिखाया था, बिकॉज टेप के बाद आई गॉट अ वेरी ब्रॉड लाइन. आई डोंट नो वाई, मे बी कोई और तरीका हो, बट जो तरीका उन्होंने अपनी वीडियो में बताया, इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी. ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने बोला है कि टू लाइन दी आईज, एंड फॉर लाइनिंग माई आईज आई एम यूजिंग दिस रिमेल लंडन कोल kajal pencil. So I'll apply it on my waterline. नेक्स्ट उन्होंने अपनी वीडियो में यूज़ किया है दी स्पार्कल्स फॉर दी आई. आई डोंट हैव द लिक्विड स्पार्कल, बट आई हैव दिस वेट एंड वाइल्ड का सिल्वर स्पार्कल विद मी. एंड मेरे जो इस ईयरबड पे ऑलरेडी ब्लैक कलर लगा है, तो आई विल मिक्स इट विद दिस वन, एंड आई विल ट्राई टू यूज़ दिस वेट एंड वाइल्ड का ग्लिटर ऑन माई आई शैडो. So I'm trying to achieve the same look. I'm trying very hard to get that look. But it seems कि
this is not working for me because जो you know liner है, it's not that sharp as what she got in her video. So I'm not happy because of it. So guys, the next step is curling the lashes and applying the mascara. And now I'm curling my lashes. And for mascara, I'm using the Maybelline Hyper Curl Lashes Mascara. So guys, this is the final smoky eye look which was done by Smitha. I'm not that happy, and maybe मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस की और ज़रूरत होगी इसमें, because maybe she has already mastered the art of doing all this by just sticking a tape, and I'm a huge fan of her, and I really love her work. And but I think इसमें मुझे थोड़ा सा ट्रबल हुआ. I think rather than using the earbud, I think मैं अगर brush use करती, so I think better मुझे sharp वो look मिलता. Maybe that can be the problem कि earbud use करना नहीं आया मुझे. But anyways, this side is a little bit thick, and this is a little bit off, so maybe sticking of tape makes a difference. Otherwise, this glittery smoky eye look is looking good, and I really like the concept of reverse eye, smoky eyes. So it was wonderful recreating the Smitha Deepak look, and yeah, in a way मैंने नहीं create किया है, definitely the same one. But yeah, if you really like creating amazing glittery eye makeup look, you can visit Smitha Deepak's YouTube channel. She is amazing, guys. And also, if you really like my videos, please also like, share and subscribe to my channel, and please don't forget to comment in the comment section below अगर आपको कोई और तरीका पता है जिससे कि I can achieve that बिल्कुल on the point and very sharp wing. So let me know guys, and keep watching my videos. मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए bye bye.